Hello students, welcome to Naazvilla. Now we are discussing the chapter number 3, Journey to the End of the Earth. By end of the earth, the writer means nothing but Antarctica. This lesson is written by Tishani Doshi. She, along with 52 members of the high school, goes to Antarctica under a program. The name of the program is Student on Ice on a ship. A Russian ship. The name of the ship is Academic Sholisky. She was the one who was working on that ship, and this program was undertaken for educational opportunities, providing them new educational opportunities which will give them a new understanding and respect for our planet. हमारे planet को वो और भी अच्छे सकें और भी respect कर सकें. It has been 6 years that this program has been going on, and it is headed by a Canadian, Geoff Green. Through this program, they are giving them a life-changing experience to learn, and most importantly, it gives them an opportunity to act before it's too late. Earlier this year, हमारी जो राइटर है टिशानी दोशी, वो एक रशियन वेसल यानी रशियन शिप पर जाती हैं. दैट इज अकेडमिक शोलिस्की. शी इज़ एन इंडियन. शी इज़ फ्रॉम मद्रास, एंड शी सेज दैट उनकी जर्नी शुरू हुई थी फ्रॉम 13.09 degrees north of the equator. She crossed 9 time zones, 6 checkposts, 3 bodies of water and many ecospheres. और जब उन्होंने अंटार्कटिका पर अपना कदम रखा, when she set her foot on Antarctica, she has already traveled 100 hours. वो 100 hours तक already travel कर चुकी थी, through car, through aeroplane, through ship. She realized that that place is a place of wonders, and it is a place of isolation. Why isolation? Because there was no human being who would live on Antarctica because it is very cold. और उन्हें अंटार्कटिका को देखकर विश्वास ही नहीं हुआ कि अंटार्कटिका कभी एक इंडिया का पार्ट भी हो सकता है. Now the next part of the lesson's title given to it is part of history. हमारा जो मैप आज दिखाई देता है वो बिल्कुल भी वैसा नहीं था पहले. हमारे जो लैंड मास था वो बहुत अलग तरह से डिवाइडेड था. 650 million years पहले there was a huge land mass. The name of that was Gondwana, and Antarctica, India, and all of it was one part of it. At that time atmosphere भी बहुत अच्छा था, warmer था. वहाँ पे बहुत सारे floras and faunas थे, बहुत सारे plants and animals थे. गोंडवाना आइलैंड जो है वो 500 million years तक सस्टेन रहा. But the time when dinosaurs और mammals हैं उनका extinction हो गया था, उसी वक्त at that particular time गोंडवाना was forced to be separated. और वो separate होके आज जैसा हमारा मैप है जिसमें हम हमारे इंडिया को अलग देखते हैं, shaping the globe as we know it today. और इसीलिए कहा जाता है to visit to Antarctica is to be a part of history. हम एक हिस्ट्री का एक पार्ट देखते हैं जहाँ हम आइज एज और ये सारी चीज़ों को अपनी आंखों से देख सकते हैं. There are many things that are mentioned here. वहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होती है, बहुत सारी चीज़ों का इम्पोर्टेंस पता चलता है, जैसे कॉर्डिलेरन फोल्ड्स यानी यहाँ माउंटेन रेंजेस होते हैं उनके बारे में कहा गया है. प्री कॉम्बारियन ग्रेनाइट शील्ड्स, ओजोन लेयर, हमारे ओजोन लेयर के बारे में पता चलता है हमें, एंड कार्बन इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन. इंडिया वॉज द पार्ट ऑफ अंटार्कटिका, and when it separated it was forced to move towards Asia and join with Asia and form an Himalayan mountain because of the friction that it caused. Okay, the next part of the land mass वो दूसरी तरफ चला गया and it became South America, and that is how we got North America and South America. और लास्ट में जो आखिरी हिस्सा बचा था वो अंटार्कटिका बन गया, and Antarctica became very frigid and dissolute, means it was an empty place because it is so cold that nobody can survive there. तिशानी दोशी कहती हैं कि शी इज़ अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन, और एक ऐसी जगह में रहना जहाँ पे 90% तक पूरा जो अर्थ क्रस्ट है वो आइसी है. इट इज़ वेरी स्ट्रेंज फॉर हर, इट्स वेरी चिलिंग फॉर हर. शी ऑल्सो सेज दैट इट इज़ लाइक दे आर वॉकिंग ऑन अ पिंग पोंग बॉल. और वो ये भी बताती हैं कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर मौजूद नहीं हैं. दैट प्लेस इज़ टोटली अवे फ्रॉम ह्यूमन मार्कर्स, यानी कि ह्यूमन एग्जिस्ट नहीं करते, इससे ह्यूमन से रिलेटेड कोई चीज़ें वहाँ पे है भी नहीं. No trees, no billboards,
No billboards means no boards for advertisement, no buildings. So there you also lose a sense of perspective. यानी वहाँ हमें टाइम के बारे में बिल्कुल पता नहीं चलता that what the time is. वहाँ पे जो विजुअल स्केल है वो रेंज करती है फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू माइटी, यानी वहाँ पे छोटे से छोटे स्मॉल माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स भी देखने मिलेंगे और बड़े से बड़े लार्ज ब्लू व्हेल्स जैसे मैमल्स भी देखने मिलेंगे, बड़े बड़े आइसबर्ग्स देखने मिलेंगे एज बिग एज कंट्रीज, एंड यू विल नॉट हैव एनी सेंस ऑफ द 24 hours whether it is day, it is night or what's going on. That place is full of silence, only the silence is interrupted by avalanches, and जब बर्फ का तूफान आता है, आइसबर्ग्स मेल्ट होकर गिरते हैं, तब हमें सन्नाटा है उसमें शोर सुनाई देता है, और उससे हमें ये भी पता चलता है कि the medical condition of the earth is not that good. The next part of the lesson is talking about human impact. It has been 12,000 years since the human civilization has come to the earth. And the moment it came to the earth, it started dominating it. Dominance is a nature of human, okay? So now the moment they came, the human population have started to increase rapidly. They are utilizing maximum amount of resources. They are giving out carbon dioxide in the atmosphere. The global temperature is increasing, and climate change is one of the most important aspects because of which the ice of Antarctica is melting. Antarctica is the only place in the world where human population has not come into existence, and that is why that place is pristine. Pristine का मतलब होता है बहुत ही एकदम नई जैसी जगह है, क्योंकि ह्यूमन टच नहीं है वहाँ पे, और बिकॉज if you visit there, if you want to study about the earth past, present and future, Antarctica is the best place to go. और इसीलिए the student on ice program is carried out by Geoff Green. The student can learn and understand about preserving our environment and our earth. This program has been so much successful because it is impossible to go to Antarctica and do not get affected by the atmosphere over there. To see the glaciers and ice shelves collapsing in front of your eyes, that time you realize that the threat of global warming is actually very real. Taking care of small things and the big things will fall into place. The next topic is explaining this concept to us. There is a microscopic organism that is known as phytoplankton. It exists over the surface of the sea. It absorbs the sunlight and goes through the process of photosynthesis. And because it goes through the process of photosynthesis, it releases oxygen in the water. And this oxygen is very much important to the animals who are actually living in the water. पर बिकॉज ओजोन लेयर जो है वो डैमेज हो चुका है, इसलिए फाइटोप्लैंक्टॉन्स है वो भी कम हो रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज नो ऑक्सीजन बीइंग मेड, एंड दस बाय टेकिंग केयर ऑफ दिस स्मॉल थिंग्स, बिग थिंग्स विल ऑटोमेटिकली फॉल इनटू प्लेस. दिस इज द लास्ट टॉपिक दैट वी आर डिस्कसिंग, दैट इज वॉक ऑन द ओशन. नथिंग बट द कंक्लूजन ऑफ द लेसन, जहाँ पे माई अंटार्कटिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एपिफेनीज, ऐसा कहा गया है. मतलब वो पूरा एक्सपीरियंस वो है वो सम अप करके कहती हैं कि इट वॉज फुल ऑफ रियलाइजेशन, where she realized the importance of the planet, of the environment and how we have to take care of it. She also says कि अंटार्कटिका सर्कल जो है 65.55 डिग्री साउथ की तरफ है. उनकी जो शिप है शोकलेस की, वो एक पेनिनसुला और टेडपोल आयरन के बीच में रुक गई थी, एंड दे कुड नॉट go further, and that is why the captain decided कि वो वहाँ से टर्न अराउंड करके वापस पीछे नॉर्थ की तरफ चले जाएंगे. बट बिफोर गोइंग उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम शिप के नीचे उतर के why don't we walk on the ocean, means what, let's walk on it on the ice that we are looking at. So all the 52 members wore their Gore-Tex. Gore-Tex is a material that is used to make jackets and shoes and gloves. They wore that because that place is very cold, तो उन्हें ज़रूरत थी उसकी, and then they wore their glares and they walked on the ocean. That experience was very beautiful. They were actually walking over the ice. उन्हें पता है कि उनके 180 meters नीचे there is salt water, and they could also see crebital seals who were stretching at the corner
वो आइस के ऊपर बैठकर स्ट्रेच कर रही थी, लाइक वी सी स्ट्रे डॉग्स, बिल्कुल वैसे ही। एंड अगेन शी सेइंग दैट एवरीथिंग इंडीड इज कनेक्टेड, चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यहाँ पे एक चीज़ डिस्ट्रॉय होती है तो दूसरी चीज़ों पर ऑटोमेटिक इफेक्ट होता है। Again, she is saying, she is concluding the paragraph by saying that 9 time zones or 6 checkposts and 3 bodies of water and many ecospheres later, यानी कि वो वापस आ चुकी है उसके बाद भी she is still wondering about the beauty of the place where she had been and the beauty of the planet. She has been thinking कि क्या इंसान जो है उनका भी अंत बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे डायनासोर्स और मैमथ और राइनोज, वोली राइनोज है, उनका हो चुका है। एंड शी इज़ बीन सेइंग दैट 2 weeks पहले वो उसे कोई आइडिया नहीं था इसके बारे में, बट नाउ a day had made such a big difference in her life and she realizes all the importance of all these things. So this was the chapter. I hope you understood the entire chapter. You can watch all the other explanation of supplementary reading. You will get it on the channel. We have almost discussed each and every point of the lesson, which will be helpful to you for your examination. And में क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, यू कैन सी हियर, पेज के साइड में है और लेसन के एंड में ऑन पेज नंबर 23 पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं इन्हें। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड डू ऑल दैट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।